हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आता है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। याद होगा आपको, शायद, उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं तो चार बार भी। और जो कठिन शब्द आते हैं उसके उसका अर्थ निकालना है आसपास के शब्दों से, आसपास के वाक्यों से, है ना। और आंसर लिखने के समय, क्वेश्चंस के आंसर लिखने के समय चार बिंदुओं पे ध्यान देना है। पहला, हमारा आंसर उसी टेंस में होना चाहिए जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, हमारा आंसर हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। तीसरा, हमारा आंसर ना बहुत लंबा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। और चौथा, आंसर लिखकर हम लोग उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, है ना। ये बातें मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको। आज मैं एक नमूना दे रहा हूँ, एक स्पेसिमेन पैसेज आप कह सकते हो, जो मैं आपको बोलूँगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि comprehension test is not only your comprehension test, that is also your language test. Whether you can write correct English or not, this is also a test of your that skill, right? आइए, लिसन टू मी केयरफुली। आज मैं एक पैसेज बोलता हूँ, बहुत धीरे धीरे बोलूँगा और आपको समझना है, और फिर जो क्वेश्चंस मैं आपको लिखाऊंगा उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। The passage starts now. There was a king in Riyadh. Riyadh is the name of a city in Arab. As we have Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, such cities in India, in the same way we have a city in Riyadh, city in Arab, which is called, what is the name of that city? Riyadh, right? There was a king in Riyadh. One day, his servant went to the market. In the market, that servant saw death, which was in human form. Death was staring at the servant. The servant got frightened. He rushed back to the castle and saw his master, the king. Sir, I had been to market a short while ago. There he met Death, which was in human form, and Death was staring at me. I'm very much frightened. Please give me your horse. I will go to Kabul. There, Death will not catch me. The king gave him his horse, and the servant went to Kabul. After his departure, the king himself went to the market. He also saw Death, which was in human form. The king asked Death, why were you staring at my servant? He was frightened. You should not have done so. Death replied, I was not staring at him.
I was rather looking at him in amazement. I had a meeting with him in Kabul this evening. What was he doing here? Thus the passage ends. Okay? I don't know how many of you could understand this passage or not. As this is passage number 1, I'm just explaining this very time, not from the next time. Hindi of this passage, so that you can understand it well. But only for this time. From next time, you have to understand it with the help of the tricks which you have just taught you in the last class. Listen to me in Hindi. अरब में एक शहर हुआ करता था, और शायद अभी भी है, जिसका नाम है रियाद। वहां एक सुल्तान हुआ करता था, राजा। एक दिन उस सुल्तान का नौकर बाजार गया। बाजार में उसकी मुलाकात होती है किससे? डेथ से। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? और डेथ क्या था? वो ह्यूमन फॉर्म में था, यानी मनुष्य के रूप में था। आप सवाल कर सकते हो कि ये कैसे संभव है, डेथ मनुष्य के रूप में कैसे होगा? तो कहानी में संभव है। मान लो कि डेथ मनुष्य के रूप में था, और वो जो डेथ था ना, वो नौकर को घूर रहा था। ठीक है ना? घूर घूर कर नौकर को देख रहा था। अब मृत्यु से तो सबों को डर लगती है, नौकर को भी डर लगा। ठीक है? वो भागा भागा आया महल, और महल में उसने राजा से कहा, मालिक, अभी मैं बाजार से आ रहा हूं। बाजार में मेरी मुलाकात हुई किससे? मृत्यु से। वो मुझे घूर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से अपना घोड़ा मुझे दीजिए, मैं घोड़े पे सवार होकर भाग जाऊंगा काबुल। डेथ मुझे वहां नहीं पकड़ पाएगा। राजा ने उसे अपना घोड़ा दे दिया, सुल्तान ने अपना उसे घोड़ा दे दिया। घोड़े पर सवार होकर वो नौकर जो था वो भागा, कहाँ? काबुल। उसके जाने के बाद राजा खुद बाजार गया। उसकी भी वहां मुलाकात हुई किससे? मृत्यु से, डेथ से। राजा मृत्यु से सवाल करता है कि तुम मेरे नौकर को क्यों घूर रहे थे? वो बेचारा डर गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेथ जवाब देता है कि मैं उसे कहां घूर रहा था, मैं तो आश्चर्य भरी निगाह से उसकी तरफ देख रहा था। मेरी और उसकी मुलाकात आज शाम काबुल में होने वाली है। वो यहां क्या कर रहा था? अब पैसे समझ में आया? उम्मीद करता हूं जरूर आया होगा। ठीक है ना? जो मैंने बताया है कि जिस तरह से, इस बार तो मैंने हिंदी बता दी, लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ हिंदी बताने वाला कोई नहीं रहेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड हाउ, by the trick which I have taught you in my last class. How? You have to find out the exact meaning of the difficult word from the surrounding words or surrounding sentences. कैसे? आपको उस कठिन शब्द का, जिसका अर्थ आप नहीं जान रहे हो, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा किससे? आसपास के शब्दों से या आसपास के वाक्यों से। ठीक है ना? और फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से इसको बनाना है, ध्यान से पैसेज को देखिएगा,
और मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये तो मैंने ऐसे कह दिया, लिखवा देता हूँ इस पैसेज को। और जब लिख लोगे आप तो नीचे मैं क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, लिखो। देयर वॉज ए किंग इन रियाद। देयर वॉज ए किंग इन रियाद. RIYADH. Stop. One day, his servant went to the market. One day, his servant went to the market. Full stop. There he saw, there, 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 he saw death, 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 which was in human form. Which was in human form, HUMANFORM, full stop. Death was staring at the servant. Death was staring at the servant, STARING, at the servant, full stop. The servant got frightened. The servant got, got, frightened, FRIGHTENED, frightened. The servant got frightened, full stop. He rushed back to the castle. He, rushed, RUSHED, rushed back to the castle, CASTLE. The servant, full stop, the servant said to his master, Sir, I had been to market a short while ago. There I saw death in human form. He was staring at me. He was staring at me. Full stop. I am very much frightened. I am very much frightened. FRIGHTENED. Full stop. Please give me your horse. Please give me your horse. Please give me your horse. Full stop. I will go to Kabul. I will go to Kabul. Full stop. There death will not catch me. There death will not catch me. CATCH, catch me. Full stop. The king gave him his horse. The king gave him his horse and he went to Kabul. And he went to Kabul. Full stop. Change the paragraph now. After his departure, DEPARTURE, after his departure, the king himself went to the market. Full stop. He also saw death. He also saw death, which was in human form. Full stop. The king said to death. The king said to death, comma, inverted comma, start karo. Why were you staring at my servant? Why were you staring at my servant? Full stop. He got frightened.
he got frightened. Full stop. You should not have done so. You should not have done so. Full stop, inverted comma closed. Death replied. Death replied, comma, inverted comma. I was not staring at him. I was not staring at him. Full stop. I was rather looking at him. I was rather looking at him in amazement. Full stop. I had meeting with him. I had meeting with him in Kabul this evening. This evening. Full stop. What was he doing here? What was he doing here? Full stop, inverted comma closed. This is the paragraph. I think you must have written it well. Now the questions. You have to just find out the answer of the questions from the passage which we have been just given to you. Question number 1. Who went to the market? Who went to the market? Sign of interrogation. प्रश्नवाचक चिन्ह. Who went to the market? Who went to the market first? Not only market, first. Sign of interrogation. Number 2. Did the king also go to the market? Did the king also go to the market? Sign of interrogation. Sign of interrogation. Number 3. What did the servant see at the market? What did the servant see at the market? Number 4. Was the servant frightened? Was the servant frightened? Frightened. Sign of interrogation. Question mark. Where did the servant go? Where did the servant go? On the horseback. On the horseback. Where did the servant go on the horseback? And last question. What is the moral of the passage? What is the moral of the passage? Just read the passage very carefully and then try to answer the questions which you have just got. Right? समझ बात आई? अभी जो मैंने पैसेज आपको लिखवाया है और क्वेश्चंस जो लिखवाया है, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है. कहाँ से? उसी पैसेज से, कहीं बाहर से नहीं. और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस कैसे डील किए जाएंगे, इसमें जो मैंने आपको बताया है कुछ ट्रिक्स, उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे होंगे. नहीं ध्यान में रखोगे नहीं होंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट डे सारे बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चंस का उत्तर लिख कर लाएंगे और जो मैंने 4 पॉइंट्स बताया है उसका ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं
वो आंसर अच्छा बनेगा। ओके, थैंक यू।